Hello children, how are you all? I hope you all are doing well, watching the videos and you are doing revision also. So children, in the previous video we were doing model test paper 2. Till now we have completed question number E, that is from A to E we have completed, and today we are going to do last question, that is question number F, and question number F is answer the following question. So here in this worksheet we have chapters 5 to 8 and we have already done question number A to E. Today we are going to do question number F. In question number F we have answer the following question. Please open page number 72. In page number 72 we have worksheet. In the worksheet model test paper 2 we have already done question number A, B, C and D children, and today we are going to do question number F. Question number F we have answered the following question. What is the number of enter keys present on the keyboard? So children, what is the number of enter keys present on the keyboard? As we know, there are two enter keys present on the keyboard. One is along with the alphabet keys and the other one is along with the numeric keypad, or the other one is with the numeric keypad. So we have two number keys. One is called number keys and the other one is called numeric keypad. And numeric keypad is just like a typewriter. The arrangement of number and symbols are same as we have in typewriter, and in that also we have one enter key. That is why we can say we have two enter key present on the keyboard. So question is answer the following question. Question number F children is answer the following questions. So here we have question number 1. Question number 1 we have what is the number N-U-M-B-E-R number of what is the number of enter keys E-N-T-E-R enter K-E-Y-S keys present P-R-E-S-E-N-T present on the keyboard. So in chapter 6 we have studied about keyboard. In that chapter we studied that keyboard has many small buttons. Among them there is a key called enter key, and enter key is used to change the line. If you want to change the line you will use enter key, and this enter key children is found twice on the keyboard. It is found at two places on the keyboard. One is just beside the alphabet key, एक तो अल्फाबेट की के बगल में होता है और दूसरा वाला न्यूमेरिक कीपैड पर के साथ होता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर टू एंटर कीज. सो आंसर में यू विल राइट 2 एंटर कीज आर present on the keyboard, or you can write just two enter keys. So two enter keys are present on the keyboard or found on the keyboard. यहाँ present लिखा है इसलिए हम present लिखेंगे. Now question number 2. अब in question number 2 we have what is the number of caps lock keys present on the keyboard? So children, what do you mean by caps lock? Recall whatever you have studied in the chapter. By the time I write the question, what is the number of caps lock, L-O-C-K, lock key? What is the number of caps lock key present on the keyboard? Now children, answer
what is the number of caps lock keys present on the keyboard? As you know children, there are only one caps lock key present on the keyboard. There are only one caps lock key present on the keyboard. And what is this caps lock key? You very well know that children. Caps lock key is the key which is used to write in capital or small letter. As you know, there are alphabet keys present on the keyboard. Using alphabet keys, we can write our name, we can write word, we can write sentences, and we can write a text. We can make a file by writing text, or documents बना सकते हैं. So when we write something children, we need to start a sentence with small letter, capital letter, and the remaining part of the sentence we write with small letter. So here when we write a proper noun, we need a capital letter. So here we need capital as well as both types of letters while writing the text or typing the text, and in that case we use caps lock. तो जब हम लिखते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ पे हमें दोनों तरह की कीज की ज़रूरत होती है, मतलब लेटर्स की ज़रूरत होती है, कैपिटल की भी, स्मॉल की भी. तो हमें जब भी स्मॉल या कैपिटल लिखना है तो वी यूज़ दिस कैप्स लॉक. कैप्स लॉक का मतलब ये होता है कि we can write letters, we can write alphabets with small or capital letter. A to Z letters को हम small में भी लिख सकते हैं और capital letter में भी लिख सकते हैं. And this we can do using this caps lock. So what is the number of caps lock? So how many number caps lock keys are found? Only one caps lock key is present on the keyboard. तो यहाँ पे हमें number पूछा गया, but we should know why this is used. That is why I told you only one caps lock, L-O-C-K lock key is present on the keyboard. K-E-Y-B-O-A-R-D keyboard. Only one caps lock key is present on the keyboard. सिर्फ एक caps lock key keyboard में present है. So you will write only one caps lock key is present on the keyboard. So here children, with this we have completed both the questions, and after completing both the questions we have completed the model test paper 2 also. Go through the videos, and we have done this in we have used for completing this exercise 3 videos. Go through these 3 videos and try to अंडरस्टैंड एंड लर्न द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे सिर्फ हम वन भी लिख सकते थे, वन कैप्स लॉक की भी लिख सकते थे, और पूरा सेंटेंस भी लिख सकते थे. आपको कुछ भी नहीं करना है, नंबर लिखोगे एंड देन कैप्स लॉक की प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड पूरा क्वेश्चन से लिखोगे. मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, ओनली वन कैप्स लॉक, ओनली वन, देन कैप्स लॉक कीज, की यहाँ की नहीं होगा, एक लिखा है इसलिए की हो जाएगा. इन क्वेश्चन इट इज रिटन कीज, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही की है, इसलिए हम सिर्फ की लिखेंगे प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. With this we have completed this model test paper. Now children, we are going to start the revision. As you know, we have completed the syllabus and now we will be doing revision. We will start from the chapter 6, as chapter 6, 7 and 8 will be coming in your exams. So we will start revising from chapter 6. So before revising, doing written revision, let us discuss, recall what we have done in chapter, or what we have studied in chapter 6. So children, if you come to page number 39, here page number 39, on page number 39 children you have chapter 6, that is keyboard. हमारे पास यहाँ पे कौन सा chapter है? Keyboard है, तो हम keyboard यहाँ पे लिखेंगे. So here we will write revision. ये रिविजन है आपका, एंड हियर कंप्यूटर क्लास 1 वी हैव, एंड नाउ वी विल राइट चैप्टर 6, दैट इज कीबोर्ड, BOARD, keyboard. Here is keyboard. So what is this keyboard children? As we know, keyboard is one of the important part of the computer, without which we cannot use a computer or we cannot perform any task on a computer. तो जो keyboard होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का और मेन पार्ट है कंप्यूटर का. बिना कीबोर्ड के हम कंप्यूटर को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. सो देर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर which are very important, and we always whenever we work on the computer we use all these
main parts. Among these main parts are four main parts are monitor, CPU, keyboard and mouse. And without these parts we cannot perform even a simplest or the single task on the computer. So all the three join together and they form computer system and we work in a system. So यहाँ पे children keyboard is one of the them, and it is also one of the main part or important part of the computer which is used for writing text. keyboard को use करके हम text लिखते हैं. What do you mean by text? Text का मतलब होता है written part. जो भी आप लिखते हो, words हो गया, sentences हो गए, इसे हम टेक्स्ट कहते हैं. राइटिंग वर्ड एंड सेंटेंसेस आर टेक्स्ट. तो वर्ड और सेंटेंसेस से हम जो भी लिखते हैं, जो भी लिखने का काम होता है उसे हम टेक्स्ट कहते हैं. TEXT टेक्स्ट. अब फॉर राइटिंग टेक्स्ट चिल्ड्रन वी नीड कंप्यूटर, वी नीड कीबोर्ड. सो हमें राइटिंग का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग? राइटिंग मीन्स टाइपिंग. TYPING टाइपिंग और राइटिंग. When you write in a notebook, you call it as, it is known as writing, and when you write in the computer, it is known as typing. अगर हम नोटबुक में लिखते हैं तो हम उसे राइटिंग कहते हैं, और अगर वही चीज़ें हम कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो हम उसे टाइपिंग कहेंगे. तो यहाँ पे टाइपिंग का मतलब भी लिखना होता है, लेकिन कंप्यूटर में. और उसके बाद जो भी हम लिखते हैं वो वर्ड्स और सेंटेंसेस के फॉर्म में होता है. हम वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर इन सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ बनाते हैं, और उसके पैराग्राफ के बाद हम बहुत सारे पेजेस भी लिख सकते हैं और उसको मिला करके हम एक डॉक्यूमेंट या फाइल बनाते हैं. तो यहाँ पे ये जो भी हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको हम टेक्स्ट कहेंगे. वॉट एवर वी आर टाइपिंग हियर इज कॉल्ड टेक्स्ट. तो हम जो भी वर्ड सेंटेंसेस लिख रहे हैं इसको हम टेक्स्ट कहते हैं. तो यहाँ पे टाइपिंग टेक्स्ट, वी कैन टाइप टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड. तो हम टेक्स्ट कैसे कंप्यूटर में लिख सकते हैं? सिर्फ कीबोर्ड के यूज से ही लिख सकते हैं. माउस से हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ना ही हम किसी और पार्ट ऑफ कंप्यूटर से टेक्स्ट लिख सकते हैं. सो ओनली वे टू टाइप द टेक्स्ट इज द कीबोर्ड. सो यहाँ पे चिल्ड्रन, व्हाट इज कीबोर्ड? What is keyboard? It is one of the main part of the computer and which is used to type text, जिसको use करके हम text लिखते हैं. Now उसके बाद we have typing. What is typing? Typing is writing on a computer. If you write on a computer using a keyboard, it is called typing. Now what is keyboard? Keyboard is, so if you want to know about keyboard, if I ask you to write what is keyboard या define keyboard, अगर मैं बोलूँ define keyboard तो what will you write? You will write keyboard is one of the main part of the computer which is used to type text, जिसको use करके हम type करते हैं, या which is used for typing. तो सिंपल सा हम डेफिनेशन लिखते हैं. यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंपल ही हम लिखेंगे. कीबोर्ड इज वन, हम कीबोर्ड से ही शुरू करेंगे. KEY की BOARD बोर्ड इज वन of the main 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 part part of a computer which is used to type, which is used for टाइपिंग. TYPING. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जिसको यूज करके हम टाइपिंग करते हैं, यानी कि लिखते हैं. सो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या मेन पार्ट. इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, मेन भी कह सकते हैं. पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच इज यूज्ड फॉर टाइपिंग. नाउ द सेकेंड थिंग विच वी हैव ऑन द कीबोर्ड इज द की. व्हाट आर की? सो फर्स्ट इज कीबोर्ड and second is small buttons on the keyboard are called keys. So here you will write it has many small buttons, BUTTON buttons, called 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 keys, KEYS keys. Now children, it has many small buttons called keys, or you can write small buttons present on the keyboard are called
keys. हम ये भी लिख सकते हैं कि small buttons present on the keyboard are called keys. Here I have written it has many small buttons called keys, or you can write small buttons present on the keyboard are called keys. So this is all for today. Go through the video, learn whatever we have done. First of all, watch the video carefully, and then learn whatever we have done in this video. So children, thank you and have a nice day ahead.